Hey, thank you for joining another episode of Primary Market Chatter. Just to highlight, this is the part 2 of this week's IPOs. हमने कल 4 IPOs कवर किए थे. ये उसका पार्ट 2 है. So कल हमने दीपक बिल्डर्स जो कि एक मेन बोर्ड आईपीओ है उसको कवर किया था. उसके अलावा 3 एसएमईज कवर किए थे. दानिश पावर, फ्रेश एरा पिकल्स और प्रीमियम प्लास्ट. फ्रेश एरा पिकल्स का आज लास्ट डेट था. और उसके अलावा प्रीमियम प्लास्ट और दानिश पावर जो कि अभी चल रहे हैं इश्यूज ओपन में, वो दोनों वो भी हमने कवर किए थे. उसके अलावा जो बाकी 4 इश्यूज हैं उनकी आज हम बात करेंगे और उनके बारे में आज डिस्कशन करेंगे. इट शुड बी, आई एम होपिंग इट शुड बी अ क्विक स्पेस. आई एम होपिंग टू कवर इट इन 40 to 45 मिनट्स, बट लेट्स सी. सो हम आज 2 मेन बोर्ड कंपनीज की बात करेंगे. एक गोदावरी बायो रिफाइनरीज, एक जो सबका जिसको इंतजार है, वायरी एनर्जीज. और उसके अलावा 2 एसएमई आईपीओ की बात करेंगे जो कि है अपनी यूनाइटेड हीट टेक और ओबीएससी परफेक्शन. सो ये 4 कंपनीज आज हम बात करने वाले हैं. जस्ट वांट टू गिव वेरी बेसिक disclaimer which I always do. We are not SEBI registered research analysts. This what we are talking about should not be thought of as a buying or selling or applying or not applying recommendation. This is just for educational purpose, and this is what we feel about the companies. So think of it as like 4 friends chatting amongst ourselves. You definitely do your own due diligence. आप अपना diligence करके ही कंपनी के बारे में अप्लाई या नॉट अप्लाई का डिसीजन लें. ये बस आपको उसको सप्लीमेंट कर सकता है, बट दिस शुड नॉट बी टेकन इन एनी वे एज अ फॉर्मल एडवाइस. हैविंग सेड दैट, मे बी वी विल गेट स्टार्टेड. आई जस्ट वांट टू हाईलाइट, जैसा मैंने आपको बताया कि हमने कल 4 कंपनीज का रिव्यू कर लिया था. वो जो अगर आपको उन कंपनीज के बारे में जानना है, दीपक बिल्डर्स में अप्लाई करें कि ना करें, दानिश पावर में करें या ना करें, या प्रीमियम प्लास्ट में करें या ना करें, तो वो मैंने ऊपर लिंक डाल दिया यूट्यूब वीडियो का, जिसपे आप जाके वो देख सकते हो. इसमें सेक्शंस भी बने हुए हैं, तो आप वो स्पेसिफिक सेक्शन भी देख सकते हैं वीडियो का इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि आपको अप्लाई करना है कि नहीं. उसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो तो डेफिनेटली पोस्ट देम इन द चैट बॉक्स. हम क्वेश्चंस जो हैं वो चैट से रीड करते रहेंगे और उस हिसाब से देखेंगे. एक क्वेश्चन जो मुझे दिख रहा है वो है कि लक्ष्य मिला कि नहीं. मुझे नहीं मिला. आई वॉज लाइक, पहले मैं थोड़ा सा था, फिर मैं देख रहा हूँ वो 511 गुना ओवर सब्सक्राइब था इन रिटेल कैटेगरी ऑल्सो, तो लाइक कि नहीं मिलना है. So it is okay. But having said that, maybe now that I have set it up, just want to talk about the order in which we'll be. सबसे पहले हम एक एसएमई की बात करते हैं, फिर एक मेन बोर्ड की तरफ जाएंगे, उसके बाद एक एसएमई करेंगे, एक मेन बोर्ड करेंगे. तो यूनाइटेड हीट ट्रांसफर सबसे पहले करेंगे, उसके बाद मेन बोर्ड की तरफ जाएंगे. सो सबसे पहले लेट मी सेट अप यूनाइटेड हीट ट्रांसफर. तो जो यूनाइटेड हीट ट्रांसफर है वो अराउंड 30 CR का इशू है. एंड मैंने काफी क्लोजली देखी है ये कंपनी, काफी टाइम से मैं ट्रैक कर रहा हूँ, क्योंकि इसका प्री आईपीओ जब डील हो रहा था तब भी अवेलेबल थी. 30 CR का इशू है. स्वस्तिका ला रहा है इस कंपनी को, और जो कंपनी है वो हीट ट्रांसफर बनाती है, हीट एक्सचेंजर्स बनाती है, सॉरी, जो कि बेसिकली हीट को मशीन कैप गुड्स जो होते हैं उनमें लगती है ये टेक्नोलॉजी. नासिक की कंपनी है. स्वस्तिका का इशू है. सो मे बी रोहित, डू यू वांट टू गो अहेड एंड टॉक अबाउट यूनाइटेड हीट ट्रांसफर्स टू बिगिन विद, while I try and find where Yash is? Sure, let me cover this. I'll not take a lot of time on this. This is a somewhat interesting company, but there are a couple of red flags which I'll cover. So, as Manish said, there's a 30. Are you saying issue. Something, Rohit? I can't hear you. Yeah, I'm speaking. Can you not hear me? Tanmay, I can hear him clearly. Okay, sorry. I will rejoin. Okay. So I'll continue. So there's a 30 crore issue in the capital goods space. So what they do is they manufacture a wide range of heat exchangers. These are liquid cool type heat exchangers, air cooled heat exchangers. They make pressure vessels. So a few different products within this sort of larger category. And these are obviously used across a lot of different, I'd say industrial as commercial use cases. They're used in engines. They're used in ships. They're used in, in chemical plants and power plants. Wherever you need to transfer heat, either make hot to cold or cold to hot. These guys focus primarily on the shell and tube, which is the largest category of heat exchanger. It's also the simplest, I would say, in terms of complexity, as well as few other, plate fin. I mean, I don't want to get into too much detail. I myself am not an expert on this, but I think the broad thing is to say that they kind of focus on the
liquid cooling type heat exchangers. And in terms of complexity, they are focused on, in a sense, the simplest but also the largest category one. They're largely a domestic business. 90% of the business is domestic, 10%. They do have about 10% export, but they have excellent clients, across categories from a Kirloskar, Cummins, a lot of PSUs like ONGC. They, in fact, deal with the Indian Navy, with HAL. So a very diverse sort of clients because obviously the use case is quite diverse. Today, like one of the interesting and sort of somewhat strange things is they have tremendous capacity, but they're significantly underutilized, and they've been underutilized for a while. It's not like they recently added this capacity and they're underutilized. They've had this capacity for the last 3 years. Today they have about in the heat exchanger side, they only have around a 20% utilization. And in pressure vessels, they are at about 5% utilization, which kind of brings me to their numbers. So given the amount of capacity, given that this is at the end of the day a very, I think, critical segment, is a segment that should see a lot of growth and should have seen a lot of growth. They've had none. In the last year, in 23, they did about 70 crore in top line. In 24, they actually degrew despite having all the capacity and, I would say having demand. They went from 70 crore to 64 crore. That 64 crore was, had around 6.23 crore of PAT. And this is where for me, the strange or the biggest red flag is at 64 crore revenue was 60 crore operating revenue and about 3.6 crore of sale of property, which they have just put in other income. And that contributes of their 6 crore, 6.2 crore PAT. 3 to 3.2 crore PAT is just that sale of land, which means that actually the operations of the business delivered 3 crore PAT on a 60 crore top line. If you look at this business on a 3 crore PAT, look at the valuations that it is coming at, it is not cheap at all. So I just found that a bit weird that it was classified as other income, not some kind of exceptional item. And, the P multiples and all have been compared, taking into account this land, or the sale of land. And that for me was the biggest sort of turnoff in this business. Even if I leave that aside, if I just look at what they have done in the first 4 months of this year, which they have disclosed, there's no growth. They've again done 21 crore in the first 4 months. I'm not sure how seasonal this business is. Generally, H2 will be stronger, but again, there isn't enough clarity, at least from the RHP, to suggest that they can do too much more than 60, 70 crore in this year as well. So if I leave this aside, the cash flows and balance sheet seem okay. They have been turning a positive cash flow. But again, that includes the sale of land. So I'm not able to buy that this is an operating cash. At least last year, this would not have been an operating cash flow business. Despite a degrowth in business, their receivables have gone up. So it's all a little iffy for me. So my concern here is the numbers. The numbers are just not stacking up. As Manish said, he's tracked this for a while. He has, I think, spoken to the promoter a few months ago, and the general read is he's a technically sound guy, but something seems to be lacking on the business front. Personally, I feel that if someone has to take a bet, you're taking a sector bet, or you're having a lot of confidence and conviction on the promoter based on and sort of his plans that is not, say, fully divulged in the RHP. I personally am not able to get that comfort. So for me, I personally will be planning to avoid this. One interesting thing is the anchor book was a bit strange. There was one stock class fund in Abacus, which has taken the largest anchor, 30-35%. And all the other anchor portion is the standard SME anchors, most of whom just flip, within a month. So it's a very strange sort of, like everything about this is very strange. The segment is good, but the numbers are just nowhere near what they should be for, such a good quality company, or at least a good quality segment if the company was of a decent quality. So for me, it's just too much positives getting utilized by negatives. So I personally will be avoiding. Probably one small point I'll add is, KRN Heat also was a recent IPO, Mainboard, very small Mainboard IPO that came, which also makes heat exchanger, which now trades at exorbitant valuations. That company is slightly different. They make more of coils and tubes, which is a much smaller sort of component, which are used in AC, air conditioning, refrigeration kind of use cases. You think of residential ACs, commercial ACs, white goods and stuff like that. Whereas UHT, from my understanding, is more about industrial heat exchangers. They're not like it. I wouldn't say one is better than the other, but just to sort of lay the difference between the two. I think as a business with a segment that UHT is in, that is very attractive. Sector is attractive.
but something is just not adding up for me on the company side. So that is my read. Manish, So, yeah. yeah, can you hear me now? Yeah, I can hear you. Right, but I guess you Perfect. can too now. Yeah, I rejoined, and when I was rejoining, I saw that it said that your space will end in 10 seconds. So if you don't rejoin, so at perfect time I rejoined. But yeah, thank you so much for covering the space as covering about this company. As you were mentioning, I have kind of been tracking this company for quite some time now. And I just sent it on our group as well. So there was some justification given on the sales decline last year, which was that they had shifted their operations from one plant to the other, and the new plant approval by customers took considerable time, during which they were not able to take any new orders. And it was also mentioned that they had limited working capital. So the pre-IPO that they were raising would help with any working capital constraints as such, and which would essentially help with providing taking bigger orders. So anything that is mentioned on the order book or anything that you could find, because I couldn't see that happening in the first 5 months. The data that is being given, it is still growing at the revenue is still pretty much flat from what I could understand. But anything that you could find in terms of the order book, etc. No, I don't think anything is mentioned. Got it. One more interesting thing is that I think the price has also slightly increased. From what I knew, it was going to come somewhere around 95 CR, but right now the market cap is at like 112 CR. So they are raising slightly more. From the last time that I had followed up, they were raising like 25 CR. Right now they are raising 30 CR. So it seems it's a bull market effect or whatever you call it. But yeah, it's a cap good company. What I could definitely feel was that the promoter was very sound. He had very good understanding of the of heat exchangers, and in fact he understood thermal engineering very well and wanted to do some design parts in house. Other than that, he also wanted to get, if I'm not wrong, he also wanted to get into air cooled heat exchangers instead of water cooled or liquid fluid cooled ones, in order to essentially mitigate the whole like unsustainability angle of using water, etc. So air cooled would have been better. But again, I don't exactly know what happened with that. So that is what my review is with United Heat Transfers. Like Rohit also covered it. Again, we feel that this is an issue which has some red flags and then some green flags. So we are quite confused as such. But Rohit, what is the valuation at which it is coming? What would be a peer? I'm not sure if you covered this, but if you could just repeat that, that would be helpful. Yeah. So again, it depends on what you view as the multiple. If you look at the 6.23 crore PAT in last year, then it is coming at, I think, 18p or something, which is fine. But if you view it as 3.5 crore of land sale, which should not be counted in the PAT at all, then it is actually coming at 30 odd times, 32 times. And for the first 4 months, I'm not sure how reliable that number is, because there is no change in scale, and all the goodness in the PAT is coming just from an improvement in gross margin. Which is basically the cost of materials that they're using to make them exchangers has fallen by 6-7%, which does not seem right or does not seem sustainable to me. So without any scale benefit, there's no reason for that to happen outside of just raw material price, the core raw material price fluctuating. So yeah, if you take it as 32p, it's damn expensive. Even if you take that, first 4 months and say the 8 months of the last financial year, take into account the fact that there is land, and that's a huge part of the PAT for last year, it throws what I have high conviction on their PAT for FY25 and value it on that. Hey Rohit, I think you're breaking up for me. I'm not sure if it is just Yes, me. yes. He's Okay. breaking for me. It should be better now. But yeah, I'm just saying that the PAT is the PE multiple is 32 if you remove the land,
It is 18 if you include the land, but I don't see why you would do that. And if you remove the land and just take the first 4 months here and you sort of take a proportionate number for the last 8 months, it comes about 26, 27p, all of which is very high for a business that at least is not showing any growth. So you need to have good clarity on what they will do this year, have some information on what they're likely to do this year if you want to take a bet at these multiples. Got it. That's very helpful. So maybe with that we'll kind of move forward to the next issue. अगले इशू की बात करते हैं. So अगली जो हम कंपनी कवर करने वाले हैं वो एक मेनबोर्ड कंपनी है, गोदावरी बायोरिफाइनरीज. So maybe गोदावरी बायोरिफाइनरीज के बारे में बात करते हैं. Tanmay, let me set it up for you. The company manufactures ethanol based chemicals, and it's a big very small size IPO for Mainboard. Around 550 करोड़ का IPO है, जिसमें से 350 करोड़ फ्रेश इशू है और 200 करोड़ जो है वो OFS भी है. So maybe Tanmay, do you want to go ahead and cover Godavari BioRefineries? I understand that like you have very good reviews on it. So why don't you want to go ahead and talk about it? Good is used in a sarcastic tone. Is my voice clear? Yes. Godavari BioRefineries was incorporated in 1956. So it is a manufacturer of ethanol-based chemicals. The company is the largest producer of MPO. It is basically a chemical-based compound which is used in fragrances, and it is one of the only two manufacturers of natural 1,3-butanediol. And the only company which makes bioethyl acetate. मतलब मुझे पता है कि ये थोड़े कंपाउंड्स के नाम सिर के ऊपर गए होंगे, मैं बहुत सम अप करके बताता हूँ. ये जो शुगर केन रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं ना, मतलब जो शुगर केन से मोलासिस आते हैं उसको कन्वर्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं. उसमें शुगर आ गया, इथेनॉल आ गया, और बायो बेस्ड केमिकल्स करके एक नेक्स्ट वर्जन ऑफ शुगर केन जूस की केमिकल्स बनाते हैं. ओके, तो ये बेसिकली ये फूड वगैरह, फूड इंडस्ट्री, फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री, एफएमसीजी और इन सब चीजों में काम में आते हैं. इनका क्लाइंटेल बताता हूँ मैं. हर्शीज, हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस, प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल, कर्नाटका केमिकल्स, एक्सेट्रा. So the company is basically raising 555 crores, out of which 325 crore is fresh issue, out of which they are repaying the debt of 240 crores, and the rest 85 crores will go for the general corporate purpose, and the rest 230 crores is going to be an OFS from the existing investor Mandala Capital Limited. It's an private equity fund. So the company is having a total debt 700 plus crores on its books. I will come to its financials. In FY23, the company did a revenue of 2000 plus crores and a PAT of 20 crores, means basically only 1% margin. In FY24, the revenue dropped by almost 15% to 1700 crores, and the PAT dropped by almost 40% to 12.3 crores. It also reported its Q1 numbers. The revenue was at 525 crores, and interesting thing is the company reported a net loss of 26 crores. See, the company made a net profit of 12 crores in FY24 and reported a net loss of 26 crores in Q1. So basically, these companies have an off first quarter. All the companies from this sector are having low margins and low utility Q1. Now, why these margins are going down, I'll explain that by sharing their product mix. So the company's 33, these are FY24 figures, okay? So the company's 33% revenue comes from selling of sugar, okay? 30% revenue comes from bio-based chemicals, 33% comes from distilleries. What is distillery? It's ethanol production, and 3% comes from others. So the company has said that we will be doing two things to increase our margins. First is we are working on some specialty ethanol based chemicals which will make our margins grow bigger, and we will be producing more ethanol and selling than sugar. Okay, now I will come to its EBITDA margins. The company did an EBITDA margin of 7.7% in FY23 and 8.8% EBITDA in FY24. मतलब ना बात ऐसा है कि ये कंपनी कुछ चीजों में दुनिया में नंबर 1 है, कुछ चीज दुनिया में टॉप 2 में आता है, कुछ चीज में इंडिया में नंबर 1 है, बट 1956 का कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी तो दिख नहीं रहा है बिल्कुल भी. तो मतलब फॉर मी 8.8% EBITDA मार्जिन इज वेरी लो. सो अब मेरा इसका FY25 पे मैंने बहुत बेसिक्स से मैंने एक्सपेक्टेशंस निकाले कि भाई FY25 में रफली कंपनी 2200 करोड़ कर सकता है. ओके, बट नाउ आई कम टू इट्स EBITDA कि मैं 9.2% EBITDA मार्जिन
रफली रफली लू तो इनका एबिटा करीब करीब 200 करोड़ के आसपास निकलता है ये साल में। नाउ इसका बहुत बेसिक सा उसके नीचे जाता है चीजें कि ये कंपनी ये साल में 60 से 65 करोड़ का इंटरेस्ट कॉस्ट देगा अपने 700 करोड़ डेट पे। नाउ वन विल से कि 240 करोड़ डेट रिपे हो रहा है, वो तो दिसंबर जनवरी में हो, तो दो महीने के इंटरेस्ट कॉस्ट सेविंग में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इतना। तो पिछले साल इन्होंने 70 करोड़ पे किया था। I'm एक्सपेक्टिंग कि इस साल 65 करोड़ अराउंड पे करेंगे, बिकॉज वन टाइम आपको एक माइनस सेटलमेंट फी भी देना पड़ता है। और इनका डेप्रिसिएशन साल का 65 करोड़ अराउंड होगा। तो और इसके बाद टैक्स घटेगा। मतलब मैं बेस्ट केस बोल दूं तो ये कंपनी ये साल 45-47 करोड़ पैट के ऊपर बना ही नहीं सकता है। ओके, दिस इज द बेस्ट केस। अब ये कंपनी आ रहा है 1800 करोड़ के मार्केट कैप पर। FY24 के इस पे ये दिखता है 146 पी पे। इंडस्ट्री ट्रेड करता है 33-34 पे। ओके, तो पी इसका पहली बार तो 150 दिखता है जो बहुत हाई है। FY25 पे अगर मैं बेस्ट केस पैट ले तो 40 टाइम्स आ रहा है। नाउ वन इंटरेस्टिंग थिंग इन दिस कंपनी इज इसका जो प्राइवेट इक्विटी फर्म है मंडाला कैपिटल एजी, इन्होंने 2016 में 189 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 2016 में इन्वेस्ट किया था। अभी ये 352 रुपीज पे कंप्लीट एग्जिट ले रहे हैं, 100% एग्जिट ले रहे हैं सिर्फ 80% रिटर्न पे। मतलब 8 साल में 80% रिटर्न। और एक कंपनी का कुछ डिविडेंड पॉलिसी भी नहीं है कि इनको कुछ डिविडेंड आया होगा तो वैसे भी कंपेंसेट हो रहा होगा, कुछ नहीं है। ओके, नाउ वन मोर थिंग इन दिस इज इन्होंने 2022 के स्टार्टिंग में डीआरएसपी फाइल किया था मेनबोर्ड आईपीओ के लिए। साइज ऑलमोस्ट सिमिलर था, सिर्फ 50 करोड़ का डिफरेंस था। वो 500 करोड़ का था, 550 करोड़ का आईपीओ, सॉरी वो 600 का था, ये 550 करोड़ का आईपीओ। इतना फर्क नहीं आ रहा है। नाउ नाउ आई वाज जस्ट थिंकिंग कि यार अगर इथेनॉल की प्राइसेस बढ़ जाए, बिकॉज ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दी ऑल मार्केटिंग कंपनीज आर पुशिंग ऑन दी इथेनॉल प्रोडक्शन एंड दी इथेनॉल सेल, कि भाई इथेनॉल का प्राइसेस बढ़ जाए। वो जो मीट है गवर्नमेंट का वो है नवंबर में, मतलब इसका Q2 भी नॉर्मली रहेगा, या फिर शुगर का डिमांड बढ़ जाएगा। बट उससे मार्जिन पे इम्पैक्ट नहीं आने वाला, टॉप लाइन पे इम्पैक्ट आके फायदा नहीं, बिकॉज कंपनी पैसा नहीं बना रही है। तो मतलब वेरी ऑनेस्ट में बोलूं, और कंपनी के ऊपर बहुत बड़े लिटिगेशन भी चल रहे हैं। मैं बोलूं तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के मिलकर ऑलमोस्ट कंपनी पे 23 केसेस है, 120 करोड़ का टोटल कंसिडरेशन है। मतलब मैं ये कंपनी को पूरी तरीके से समअप करूं तो कंपनी बुरी नहीं है। आई विल नॉट से इट्स अ वेरी बैड और वर्स्ट इशू, बट इट्स लाइक मैं क्यों करूं कंपनी में। एंड ऑफ द डे इट्स अ शुगर कंपनी, और शुगर के ऊपर थोड़ी और चीजें बना रहा है। तो इनका पीयर कंपैरिजन भी देखा मैंने। पेयर कंपैरिजन में बहुत मतलब मुझे चीज समझनी है। पहले बात तो इन्होंने अल्काइला माइंस दिखाया है। ओके, और एक दो केमिकल कंपनीज के नाम है, फिर ये सीधा द्वारे के शुगर पे आ गए। मतलब वो बहुत बड़ा डिस्पैरिटी है शुगर कंपनीज और केमिकल कंपनीज में। तो मतलब ऐसा है कि व्हाई शुड आई इन्वेस्ट इन अ कंपनी विच इज हैविंग अ 35-40% रेवेन्यू फ्रॉम शुगर एट 40p, वो भी फॉरवर्ड अर्निंग्स पे इन द बेस्ट केस। और मतलब मुझे ये आईपीओ में लगाने जैसा पर्सनली कुछ नहीं लगा। लॉन्ग टर्म पे मैं इस पे बेट 2-3 महीने तो नहीं लूंगा। तो मतलब आई फील कि इसमें मतलब अवॉइड ही कर देना चाहिए, इसमें लगाने पे कोई फायदा नहीं है। और ये भी है ना कि कंपनी ने ऐसा भी नहीं कि कंपनी को अपने निगेटिव पता चले, कुछ सस्ते वैल्यूएशन लेके आए, 1800 करोड़ के मार्केट कैप पे लेके आए। मतलब कोई सेंस नहीं बनता इन चीजों का। मतलब और मैं और एक चीज ऐड करूंगा कि मंडाला कैपिटल का और एक बेट था 2018 16-17 में। वो एक लैब की कंपनी थी, एडवर्ड फूड रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर, EFRAC। तो उन्होंने इस कंपनी में 81 करोड़ इन्वेस्ट किया था, और अभी उन्होंने 15 करोड़ में एग्जिट लिया है। मतलब ये जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है ना, इनके और एक इनका इन्वेस्टमेंट था जैन फूड्स करके। तो कंपनी 2020 में $1 बिलियन वैल्यूएशन पे आईपीओ लाने की कोशिश कर रही थी। अभी ये कंपनी निगेटिव कैश बैलेंसेस पे बैठी है, मतलब कंपनी नेट लॉस बना रही है। जैन ग्रुप, जैन इरिगेशन जो ऑलरेडी लिस्टेड है, उनकी ग्रुप कंपनी है। तो ये मंडाला कैपिटल के आज तक इंडिया में कोई भी बेट सक्सेसफुल नहीं गया है। वन वॉज कवेंटर एग्रो, जिन्होंने भी 2022 में आईपीओ विड्रॉ कर लिया। मतलब मुझे यार इस कंपनी में क्यों लगाऊं, मुझे इसका कोई रीजन नहीं मिला। आई नो कि यार इसमें बहुत सारे स्टोरीज चल रही है, इथेनॉल है, ये केमिकल्स है, दुनिया में ये है वो है। एंड ऑफ द डे ये कंपनी 70 साल पुरानी कंपनी जो कुछ पैसा नहीं बना रही, तो मेरे लिए ये अवॉइड है। और मतलब किसको लगाने तो बहुत हाई रिस्क टेकर्स कैन इवन थिंक ऑफ इट। मैं नहीं बोलूंगा कि छोटे लिस्टिंग बन सकते हैं नहीं। आई एम मोर इंटरेस्टेड टू सी इट्स एंकर बुक। तो एज ऑफ नाउ इट्स एन अवॉइड फॉर मी। गॉट इट। वेरी क्रिस्प रिव्यू। कब आ रहा है इसका एंकर बुक? आई थिंक 23 को है, तो कल आएगा राइट इसका एंकर बुक? कल आएगा एंकर बुक, यस। गॉट इट। सो आई फॉर एम नाउ इट्स एक्सपेक्टिंग कि प्रोबेबली हाँ, सॉरी बहुत गो। लॉन्ग टर्म फंड्स
half of the anchor book should be mutual funds and half of the anchor book should be, I think, regular जो लाए जाते हैं वैसे anchor book ही लग रही मुझे ज्यादातर इसकी. Got it. Although anchor book should be sufficiently large in size, right? लगभग 150 करोड़ की anchor book होगी अगर 550 करोड़ का issue है तो. Correct, correct. Let's see how it comes across. But for now, this is the review that we had for Godavari BioRefineries. I haven't read the company, so I don't have a clear idea. But again, as Tanmay said, kind of planning to go with Tanmay's review on this one and kind of skip the issue. But Rohit or Yash, do you guys have anything to add on Godavari BioRefineries, or we can move on? Nothing really to add. Not a fan of the sector. It's too much government dependency. It depends on the rainfall, depends on whether government allows ethanol production or not. These guys are maybe a little more de-risked because of this chemical element. But otherwise, I'm not a big fan of this segment. सर एक क्वेश्चन आया कि इसका जीएमपी कितना है. इसका जीएमपी 0 है करंट, क्योंकि जीएमपी में काम शुरू नहीं हुआ है. Got it. With that, maybe let's move forward and talk about the fourth company. Third company is slightly behind time. एक company है OBSC Perfection करके, उसकी बात करते हैं. उसके बाद Waaree Energies की बात करेंगे. So OBSC Perfection also is a company which I kind of liked and wanted to discuss per se. So was excited about this one. So this is a 66 CR IPO, 66 करोड़ का IPO है, थोड़ा सा बड़ा IPO है comparatively. और कंपनी जो है वो प्रिसीशन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स बनाती है, प्रोडक्ट्स बनाती है. सो मे बी यस, डू यू वांट टू गो अहेड एंड कवर ओबीएससी परफेक्शन एंड शेयर योर रीड ऑफ द कंपनी? Sure, Manish. So I'll start with what the company do. So they are precision metal component manufacturers, which offers diversified precision engineering products, which are used in automotive sectors by original equipment manufacturers. They mainly supply these equipments to automotive sectors, but they mentioned in their RHP that they also manufactures defense, marine, and telecommunication products as well. But if I looked at their revenue contribution, 92% of their revenue comes from automotive sector, and their defense is very negligible. It's close to 70 lakhs. Then their marine is 3.4 crores, which is 6% of their total revenue. So what I saw is this percentage does not make sense to me because अगर लास्ट 3 ईयर से देखें तो ये अमाउंट में एब्सोल्यूट टर्म्स में डिक्रीज ही हुआ है इनका मरीन का कंट्रीब्यूशन. सो जो भी इन्होंने आरएचपी में लिखा है कि वी आर मरीन डिफेंस एक्सेट्रा, आई थिंक वी शुड इग्नोर दैट एंड कंसिडर दिस एज अ automotive component manufacturers who supplies to OEMs. So they manufacture wide range of precision metal components that includes cut blanks, shafts, spline shafts, piston rods, semi-finished pinion, drive shafts, etc., etc. And also they mentioned gear shifters, cable end, etc. So uh, how the company operates is how they generate their revenues. They have a blend of their orders, which consist of the orders directly received from their OEMs, plus they have nomination letter basis, which is the interest of the OEMs and signifying that they have a customer base over here and there are new part of the projects which has a business potential for the company to capture over a certain period of time. So it is more of a like कि suppose if I'm saying कि मेरा 100 करोड़ का नॉमिनेशन लेटर है, तो this is just कि I'm saying that कि 100 करोड़ का और products which OEMs require are available for the company to capture it over a period of, let's say, 2 to 3 years. So if I talk about the order book, their order book as of now, pending order book as of now is 28 crores, and they have received the nomination letters for 360 crores approximately. So why they are raising funds? They are raising funds to expand their manufacturing capacity, which is at Unit 3, which is at Chennai, Tamil Nadu, and Unit 4, which is at Pune, Maharashtra. So they are approximately spending almost 30 crores 31 crores in capital expenditure. Then they are using almost 17 crores to fund their working capital requirements, which will be used because they have expanded their capacities. Then the rest of it will be general corporate purposes. If I talk about the average utilization over the past 3 years, so past 3 years,
88% मोटा मोटी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रहा है. व्हाट द कंपनी डिड इज उन्होंने अप्रैल से अगस्त 24 का डेटा दिखाया इन द आरएचपी, बट व्हाट दे मेंशन इज उन्होंने पूरा कैपेसिटी दिखा दिया एंड देयर प्रोडक्शन यूनिट्स दिखा दिया एंड यूटिलाइजेशन दिखा दिया. व्हाट दे कुड हैव डन इज कि इसको H1 के टर्म्स में ही दिखाना चाहिए था, बिकॉज अगर कोई ओवर ऊपर ऊपर से पड़ेगा तो उसको बस दिखेगा कि 39%, 16%, 37% यूटिलाइजेशन हुआ है, क्योंकि ये तो पूरे साल यूटिलाइज होगा. तो आई थिंक फॉर दिस H1 also they have utilized approximately the same numbers, 80 to 85%, 80 to 90% अप्रोक्सीमेटली. एंड जो इनका जो नया प्लांट है, जो दो कैपेक्स यूनिट में कर रहे हैं ये, उनका लैंड एक्विजिशन दे हैव कंप्लीटेड, साइट डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चरल वर्क्स दे हैव कंप्लीटेड विद इंटरनल अक्रूवल्स. नाउ दे आर प्लानिंग टू प्रोक्योर दिस इक्विपमेंट्स एंड न्यू मशीनरी which should be done by February 25th. Then they'll start trial run by March 25th, and commencement of the commercial production will be from next fiscal year, which is FY26. So this is very main point कि ऐसा नहीं है कि अभी कैपेसिटी एक्सपेंड हो जाएगी, ऑल्दो फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगी, बट ट्रायल रन वगैरह करके बेसिक अप्रूवल्स का भी जरूरत होता है कंपनी को. तो इसके बाद ये अप्रैल से नेक्स्ट ईयर ही स्टार्ट होगा. व्हाट आई ऑल्सो सॉ इज इन्होंने लास्ट H1 मतलब करंट H1 FY25 में भी दे हैव एक्सपैंडेड अराउंड क्लोज टू 20% कैपेसिटी इन्होंने बढ़ाया है, which is unutilized as of now, क्योंकि 85% के आसपास कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था लास्ट ईयर का, एंड उसमें 20-25% बढ़ाया है इन्होंने. तो कंपनी इज कमिंग एट अ PE ऑफ क्लोज टू 20 पोस्ट इशू, which is slightly less than the peers. ऑटोमेटिव सेक्टर में 25-30 का PE अगर कंपनी ग्रो कर रही है गुड इनफ तो उनको मिल जाना चाहिए. प्लस दे विल डू 25% ग्रोथ ये H2 में. तो प्राइसिंग इज बिट फेयर, आई वुड से काफी कुछ प्राइस कर रखा है, बट स्टिल देर इज 25% ग्रोथ जो इस फाइनेंशियल ईयर आएगा. देन देर इज न्यू कैपेसिटीज, जो करंट एसेट बेस है उसको ऑलमोस्ट more than double कर देगा. So currently they have property plant equipment of 41 crores and वो 30 crores का और एक्सपेंडिचर कर रहे हैं. तो नया प्लांट एंड इक्विपमेंट सब मिला के ऑलमोस्ट 70 crores हो जाएगा. प्लस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी है उनका 9.5 crores का. तो ऑलमोस्ट 80 crores का फिक्स्ड एसेट देखने को मिलेगा. कंपनी के पास डेट थोड़ा ज्यादा है, क्लोज टू 50 crores, 52 crores का इन्होंने डेट ले रखा है. एंड वन थिंग विच आई नोटिस्ड इज इस H1 में, FY25 के H1 में दे हैव ट्रेड पेबल्स क्लोज टू 15 crores एंड लास्ट फुल ईयर में ये खाली 5 crores था. तो ये ट्रेड पेबल्स इंक्रीज होना एंड देन ट्रेड रिसीवेबल्स इज आल्सो इंक्रीजिंग. दिस शोज दैट कि ये जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग है, दे हैव स्लाइटली ट्राइड टू इंक्रीज द कैश इन देयर बुक्स doing this trade payables thing by increasing the trade payables. बट मोटा मोटी कंपनी लास्ट 4 years से कैश पॉजिटिव रही है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में अपनी. एंड गिवन दैट दे हैव आल्सो डन दिस साइट डेवलपमेंट थ्रू इंटरनल अक्रूवल्स, आई थिंक शुड नॉट बी अ इशू गोइंग फॉरवर्ड. व्हाट आई फाउंड पर्सनली इशू इन देयर फाइनेंशियल इज कि उन्होंने मार्जिन थोड़ा ज्यादा दिखाया हुआ है. 10.5% का मार्जिन है, विच आई थिंक शुड नॉट बी मच हायर, बट I think we should wait for a IPO interview or IPO meet by the company itself to clarify like why they sustain this margin. Also, ये margin expansion इस वजह से भी हो सकता है because steel prices were dropping this financial year and last 2 years में steel prices were rising after COVID. तो इसकी वजह से भी they have a profit margin expansion in the bottom line. If I talk about कि इसका मेजर काम क्या होता है, तो मैं डिफेंस, मरीन, टेलीकम्युनिकेशन ये 3 फालतू सेक्टर के बारे में बात नहीं करूंगा जो वो करती नहीं है. आई विल मोर टॉक अबाउट कि ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में वो क्या करती है. एग्जॉस्ट सिस्टम है उनके पास, ब्रेकिंग सिस्टम्स हैं, स्टीयरिंग सिस्टम्स है, सस्पेंशन सिस्टम्स है. तो ये सारी चीजें नहीं बनाती है, ये ऐसी चीजें बनाती हैं जो इसके अंदर यूज होते हैं, विच इज शाफ्ट्स एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. तो मोटा मोटी आई लाइक द कंपनी क्वाइट अ लॉट. आई थिंक इस ईयर तो कुछ नहीं है, बट नेक्स्ट ईयर देयर इज सिग्निफिकेंट लेफ्ट ऑन द टेबल, गिवन दैट कि एसेट बेस बढ़ जाएगा एंड एसेट टर्नओवर भी कंपनी का इज क्वाइट गुड ओनली. द नेगेटिव साइड राइट नाउ इज डेट टू इक्विटी इज क्वाइट ऑन द हायर साइड, बट न्यू कैपिटल इन्फ्यूज करने के बाद दैट विल ऑल्सो कम टू at least below 1. एंड अभी एसेट टर्नओवर इज मोस्टली 130%. तो आई थिंक कंपनी अच्छे से रन करी जा रही है. एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज ऑल्सो 6.7. तो हाई डेट का जो इशू है वो नहीं होना चाहिए, ऑल्दो 52 crores ही है.
एंड इन टर्म्स ऑफ इसका पोस्ट इशू, तो पोस्ट इशू जैसे मैंने बोला कि ये 20 के पी पे आ रही है, तो आई थिंक एटलीस्ट 28 to 30 का पी इट कैन कमांड. सो देयर इज सिग्निफिकेंट अपसाइड गिवन दैट आईपीओ के बाद देयर विल बी quite a new investors because pre IPO हुआ नहीं है. Also pre IPO नहीं हुआ है, तो I found very interesting let's say interesting anchor in its anchor book. तो इसमें एक नाम था which was just a second, which was Brescon Opportunities Fund. So जो इस फंड के ओनर हैं, Brescon Opportunities Fund के, इनको 20% एलोकेशन मिला है एंकर बुक का. एंड जो इसके ओनर हैं, ही हैज बीन डायरेक्टर इन वेरियस लिस्टेड कंपनीज. फॉर एग्जांपल वेल्सपन कॉर्प विच इज 18,000 करोड़ मार्केट कैप कंपनी, उसके डायरेक्टर रह चुके हैं. तो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग क्योंकि गिवन प्री आईपीओ नहीं हुआ है, बट आई हैव नॉट सीन एनी एंकर होल्डिंग मच टू हिज investments. So let's see how and what they do with this. But it was quite surprising कि listed company के एंकर हैं. और इससे पहले आई थिंक ही हैज ओनली डन 2 issues एंड द अदर वन वाज मैक कॉन्फ्रेंस. तो अभी मैक कॉन्फ्रेंस का एंकर खुलने वाला होगा, तो उससे वी कैन एक्सट्रापुलेट एंड 29th 30th डे पे देख सकते हैं कि क्या करना है इसका. बट ओवरऑल आई थिंक कंपनी इज वेरी गुड प्रमोटर्स. ऑल्सो इसका एक बहुत बड़ा कंपनी भी है विच इज एंजेलियन ओमेगा ग्रुप, तो ये उसका पार्ट है विच इज इनटू बिजनेस क्वाइट अ लॉन्ग. अभी if I open their website, they have mentioned Shinkansen train components, which is a Japanese bullet train. So they have not given any other specification into what they have done and why they are showing it over here. But if they are showing, so मतलब kind of deduction है कि they are providing some kind of very small components for that company as well. So for conclusion, I would say कि PE is quite fairly priced, but still there is upside. At least 30% 40% अपसाइड होना चाहिए. कंपनी के पॉजिटिव कैश फ्लोस हैं और कंपनी बड़े ग्रुप का पार्ट है विच इज एंजेलियन ओमेगा ग्रुप, एंड एक्सपैंड कैपेसिटी कर रही है अपना इवन आफ्टर यूटिलाइजिंग कैपेसिटी फ्रॉम पास्ट 2 years. तो दैट इज ऑल्सो गुड थिंग कि ऐसा नहीं है कि लास्ट 2 साल से झक मार रहे थे एंड तीसरे साल इन्होंने कैपेसिटी एक्सपैंड कर दिया. एंड मोर और लेस इनके जो मार्जिन हैं विच इज क्लोज टू देयर पियर्स जो इन्होंने मेंशन करे हैं, तो आई थिंक दिस शुड डू गुड. Got it. Thank you, Yash, for covering the company. So अभी हमने ये तीसरी कंपनी की बात कर ली जो कि थी OBSC Perfection. इस पे तन्मय, Rohit, do you guys have to add anything? I still haven't read the company in that much detail, but whatever I could read, I kind of like the play at the level at which company was coming in at. But anything that you guys have to say, or we can move to the highlight issue of the day. Is there any projection for FY25, FY26, given the promoter in any meet or something? I think IPO meetup conduct होगा, so not as of now. Okay. But FY25 पे तो there will not be much growth. 20-25% का growth होना चाहिए, and then majority of the growth will come in next year. Nothing much to add, Manish. I think the one thing with these companies, and it's just a general point for everyone, is just take a look at their exact product mix, the types of products that they make, how niche they are, how common, how simple they are, and just compare them with some of their peers. I myself haven't done it. I've not studied this company. But that's just one thing to do, so you get a sense on where this fits in this whole ecosystem of precision engineering. That word of precision engineering can mean very complex parts, but can also mean very simple parts also. So just do that to see where in the ecosystem this company fits. Got it. Let's see. There's still some time to come for this IPO. आज इसकी एंकर बुक आई है.
So कल से ये issue open होगा. But with that, we'll kind of move to the highlight issue of the day, Waaree Energies. And it's again something which I have been spending hours on. I've been on hours on calls with Tanmay to figure out कि भाई इसका future path क्या होगा. So there's a lot of effort which kind of goes into this. Maybe with that, although this doesn't need any setting up, but let me try and do my best. It's a 4300, 4320 CR issue, out of which 3600 is a fresh issue and लगभग 700 करोड़ का OFS है. जो कंपनी है वो सोलर मॉड्यूल्स बनाती है एंड वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स है, काफी ब्रांडेड प्ले है मॉड्यूल्स बनाने वाला. सो मे बी तन्मय, डू यू वांट टू गो अहेड एंड टॉक अबाउट वारी एनर्जीज? Yes. Is my voice clear? यस. So Waaree Energies Limited is India's largest manufacturer of solar photovoltaic modules in India with a capacity of 13.3 gigawatts. It also does EPC, operations and maintenance, and IPP, independent power producer. So the company is basically raising 4321 crores, out of which 3600 crores will be a fresh issue. So the company is utilizing 2775 crores for setting up a new integrated facility in Odisha for 6 gigawatt for solar ingot wafer cell module. Okay, so it will be an integrated facility. In this ingot wafer cell module, all four will be produced with an capacity of 6 gigawatt each. Okay, and rest 825 crores is for GCP. 721 crores will go for the OFS. Okay, so I'll come to its financials. In FY23, the company did a revenue of 6,751 crores. Okay, and the PAT was at 500 crores. Its EBITDA margin was 8%. In FY24, the revenue jumped by almost 80% to 11,400 crores, and the PAT jumped by 2.5 times to 1274 crores, and there was an EBITDA margin of 15.6%. But a thing to highlight is, out of 1274 crores, there was an exceptional gain of 341 crores on the charges taken by the company on cancellation of certain orders. The company has also given its Q1 June quarter numbers, where the revenue was 3,409 crores and there was a PAT of 401 crores. But interestingly, the EBITDA margin increased from 15.6% to 18.3%. Now I will come to its order book. The company is currently at 16.7 gigawatt of solar modules. It is having an order book of 704 megawatts in EPC, 500 megawatts of O&M, and 100 megawatts in IPP. Okay, the company is set to commence a new facility of 1.6 gigawatt in Q3, means the next quarter, after September quarter, the December quarter, of 1.6 gigawatt solar module facility, solar cell facility in the United States, and 3.8 gigawatt cell manufacturing in India. Okay, the company has also received the PLI for the integrated facility of 6 gigawatt each. So basically, this complete facility in Odisha is an 9,500 crore investment project, out of which 2,775 crores will come from the IPO. The company already has a cash and bank balance of 3,700 crores. The company also has signed a debt line of 5,500 crores, but the management and the CFO Sonal Srivastava is saying that it is a 2-year project, so our internal accruals and cash flows will be much good to take care of the extra needs out of this proceeds which are going to be raised from the IPO and the existing cash balances. And if the company requires, it will take the debt. Okay, so company is basically coming at a valuation of 43,180 crores. अभी मैं इसके थोड़े वैल्यूएशंस पे आ जाता हूँ. FY24 पे 33.9 टाइम्स का वैल्यू, मतलब 34 की पी पे आईपीओ आ रहा है. बट अगर मैं उसको एडजस्ट कर दूं विद दैट 341 करोड़ एक्सेप्शनल गेन, तो इसका 46 का पी निकल के आता है. नाउ मैं ना इसकी थोड़े फ्यूचर प्लानिंग्स के बारे में बताता हूँ. तो कंपनी अभी बेसिकली सिर्फ एक सोलार इकोसिस्टम, पहली बात तो एक सोलर पीवी मॉड्यूल कंपनी थी, बट मतलब मॉड्यूल इज बेसिकली taking raw materials, which is solar cell, from the Chinese OEMs and then assembling and selling modules. Okay, but अब ये कंपनी सेल्स में जा रहा है, इंगोट्स में जा रहा है, वेफर्स में भी जा रहा है.
तो ये कंपनी अभी एक कंप्लीट सप्लाई चेन ऑफ द सोलर इकोसिस्टम बनना चाहते हैं, बिकॉज दे ऑल्सो हैव ईपीसी एंड ओएनएम विद देम. बट नाउ कंपनी इज ऑल्सो गोइंग इनटू द ग्रीन एनर्जी स्पेस. तो कंपनी ने एक चीज लिखा है आरएसपी में कि हम FY26 मतलब अगले फाइनेंशियल ईयर के एंड में, मतलब Q4 ऑफ नेक्स्ट ईयर, विच इज गोइंग टू बी जनवरी टू दिसंबर 2027, ओके 2026 सॉरी. तो तो वो कंपनी वन लोकली इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग के लिए ट्राई कर रहा है. द कंपनी इज ऑल्सो सेट टू मेक एन 3.5 गीगावाट लिथियम आयन सेल प्लांट. ओके. और अभी मैं और इसका चीज एक बोलूंगा तो FY25 में मैंने इसका एक रेवेन्यू एस्टीमेट और प्रॉफिट एस्टीमेट निकाल के देखा. सी दिस इज अ वेरी इनिशियल एस्टीमेट. मैं फाइनल वर्डिक्ट में इसका एक अच्छा और मोर एनालाइज्ड डिटेल नंबर दूंगा. तो रेवेन्यू इसका रफली रफली 15,500 करोड़ निकल के आ रहा है और प्रॉफिट अराउंड 1600 1650 करोड़ निकल रहा है. तो अभी मैं देखूं तो ये FY25 के नंबर पे वारी एनर्जी 26 से 27 टाइम्स पे आ रहा है. ओके. अभी और एक चीज इसमें पॉइंट टू नोटिस, ये कंपनी के ऑलरेडी दो लिस्टेड कंपनीज है, ग्रुप कंपनीज है, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज एंड वारी रिन्यूएबल्स. ओके. तो इनका अगर मैं मार्केट कैप निकालूं तो आज के दिन आएगा रफली रफली 14 आएगा, मतलब 18,000 करोड़ आएगा. बट इसमें वारी का स्टेक निकालूं और जो इंडियन मार्केट्स में ए स्टेक वैल्यू को 50% टू 55% डिस्काउंट दिया जाता है, तो पोस्ट गिविंग एंड डिस्काउंट इनका भी वैल्यू 7,000 करोड़ के हिसाब से आता है अराउंड अराउंड. तो प्रीमियर अभी एक रिसेंटली एक लिस्टिंग हुई थी, वो 60 to 65 टाइम्स FY25 पे चल रहा है, विच इज अ सेल एंड अ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर, और वो भी इंगोट और वेफर में जा रहे, बट उनको और 2 से 2.5 साल लगेगा. बट वारी आज के दिन सिर्फ एक मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर, बट वो नेक्स्ट क्वार्टर से सेल में भी आ जाएगा. तो आप इसको प्रीमियर के आई नो कि प्रीमियर के मार्जिन्स और बेस उसका छोटा है और ग्रोथ बहुत अच्छी आएगी उस पे. तो उसका आज के पॉइंट पे प्रीमियर एक इज एन गुड कंपनी देन वारी, बट वो टेबल्स टर्न हो जाएंगे थोड़े टाइम में. तो वारी को मार्केट एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म में प्रीमियर के ऊपर भी एक प्रीमियम दे सकता है. तो आई पर्सनली फील कि इसको मार्केट कैन इवन गिव अ मल्टीपल ऑफ 65 टाइम्स. आई नो कि बहुत क्रेजी मल्टीपल है, बट एक चीज है कि ये सोलार में है, लिथियम में है, इलेक्ट्रोलाइजर्स में भी है. यूएस का इनका नेक्स्ट क्वार्टर आई थिंक 2 महीने में नया प्लांट खुल रहा है. दे आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग विद सम पार्टनरशिप्स विद एन फॉरेन ओईएम्स, फॉरेन सोलार कंपनीज. तो आई फील मार्केट इसको बहुत एक अच्छा वैल्यूएशन दे सकता है. और मतलब आई विल नॉट बी सरप्राइज कि ये 100% तो ये इजीली लिस्ट हो जाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट ये 120% तक भी लिस्ट हो सकता है. मतलब आई सी दिस कंपनी गेटिंग एन 1 लाख करोड़ मार्केट कैप इन शॉर्ट टर्म, और ये 7,000 करोड़ का स्टेक का भी वैल्यू धीरे धीरे वो भी दिखेगा. अब इसके एंकर बुक पे आता हूँ. मतलब बहुत ही अच्छी एंकर बुक थी, बहुत अच्छे नाम लिखे थे इसके अंदर. मैं एक चीज हाईलाइट करूंगा कि मधु केला का जो फंड है, और उन्होंने, और मधु केला जी के साथ और 2-3 फंड्स थे, तो उन्होंने 225 के रुपए पे जब प्री आईपीओ राउंड हुआ था 2022 में, तभी पार्टिसिपेट करा. 500 450 500 रुपीज के टाइम पे भी पार्टिसिपेट करा, और वही उन्होंने और 26-27 करोड़ एंकर बुक एट 1500 रुपीज भी डाला है. मतलब दिस सर्टनली बूस्ट कॉन्फिडेंस की यार जो पुराने इन्वेस्टर से वो और इस कंपनी में एक और एक ओनरशिप लेना चाहते हैं. तो आई फील, एंड वन मोर थिंग टू नोटिस द मैनेजमेंट. सी हितेन भाई जोशी आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्रमोटर्स आई हैव एवर सीन. बहुत ही जेन्युइन प्रमोटर है. बहुत मतलब उनके बात करने में वो हम्बलनेस दिखता है. वो व्हाट वी कैन से द हंगर टू ग्रो द ऑर्गेनाइजेशन इनटू अ बिग ग्लोबल जायंट तो दिखता है उनकी बात करते समय. और द सीएफओ सोनल श्रीवास्तव, she also has a very good background. She was in Lafarge. She was also in the wholesale. Wholesale means was an holding company of Ambuja and ACC Cement. Post acquisition by Adani Group, so that was the wholesale group. इसके बाद आई थिंक और एक दो बड़ी एंटिटीज में भी काम किया. सीएफओ इज ऑल्सो अ वेरी केपेबल पर्सन. तो आई फील एक टॉप नॉच वन ऑफ द बेस्ट आईपीओज इंडिया के मार्केट्स में आ रहा है. मतलब इट विल बी फुलिश फॉर एनीवन टू मिस दिस आईपीओ. मतलब जितने डीमैट अकाउंट है, जितने पैसे सब लगा देना चाहिए. बहुत ही अच्छा आईपीओ है. मतलब इससे अच्छा आईपीओ बहुत जल्दी से आना मुश्किल है. Got it.
इसमें मेरा एक दो क्वेश्चन है तन्मय, जो कि मैंने उस दिन भी आपसे पूछा था। तो आपने बताया कि 341 361 सीआर टाइप का जो है वो वन टाइम इनकम है, क्योंकि उनका कुछ तो ऑर्डर कैंसिल हो गया था जिसकी वजह से उनको हट जाना और फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड रिइंबर्समेंट टाइप का कुछ मिला था। सो इज दैट यस। करेक्ट दैट इट विल नॉट बी रिपीटेड? लाइक व्हाट वाज दैट, व्हाई वाज दैट? उसके बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन मिला क्या आपने को? देखो सर, मैंने एक्चुअली ये जो चीज लिखा था ना, इनके FY24 का भी जो एनुअल रिपोर्ट आया था ना, उसमें लिखा हुआ था। ओके। बट मैं अगर वो सेम डेटा अगर मैं पुराना देखूं, मतलब FY22 FY23, तो उसमें कुछ भी ऐसा डेटा नहीं है। ओके। तो एक काम करता हूँ, गिव मी 10-15 सेकंड्स में आपको एनुअल रिपोर्ट में से वो पढ़ के बता देता हूँ। ओके, जो उन्होंने दिया है, बिकॉज आई हैव जस्ट ओपन दैट। Got it. In the meanwhile, Rohit, do you have anything to add on Waaree? What is your vibe? What is your feel saying? I understand it's a dumb apply at an evaluation, at least at IPO price. Ek do question maybe, Rohit, this is something which you have done. What is the expectation on big HNI applications, retail applications, small HNI applications? Okay, so I'll take the second one first, which is the expected applications. Uh, I think the total number of applications in BHNI is 20,000 or so, roughly 20,000, for the sake of easy math. If everyone who applied for Bajaj Housing, which was the biggest ever, and obviously had a lot of hype, and was Bajaj Group and all that, that was around 240, 250,000. So big HNI, I mean, if everyone who applied in Bajaj comes, it will be 12 times on in the BHNI category. Premier, which closed just a little before, like a week before Bajaj, that itself was, I think, 150,000 applications. And that had as much CMP, that had a decent amount of hype. Maybe not as much as Waaree, because Waaree also has a listed company, so the brand is a little bigger. But I feel it will fall somewhere between these two numbers. I think Mota you can say 200 to 220,000 maybe applications. I don't think it will cross Bajaj is what I feel. So it should be 10 to 11x BHNI. And then you can say that SHNI will probably be 40 times, 40 to 50 times in that range. So that's my expectation. On the read of the company, I think Tanmay has covered it. I think the main thing with Premier, with this is, see, it's very difficult to say exactly where the market will draw the line, because we saw at Premier also listed at 1,000, went to 800, went to 1,200, now it's 1,050. I mean, it's moved so much that the valuation is not a fixed number, right? I mean, that swing itself is around 50% in like barely a month. So you can't say whether 40p is right or 60p is right, because it has touched both numbers. And when I say P, this is on the FY25 number. I think what will be good is to get some clarity on what that FY25 number can be and try to value it close to Premier. The reason I feel that it will be close to Premier multiple is because Waaree does not yet have cell, and cell also takes time to stabilize. It's not like the day you launch the cell production, you'll start seeing the higher margins. In Premier specifically, it took them 1 year of negative margins for the cell line to stabilize before they actually start seeing the benefits. So in Waaree also that can happen. So I feel that the value of the cell is probably 6 to 9 months away. So I feel that it's still today a module maker. It is a module maker with phenomenal promoters and vision and all of that, but it's a module maker. So a module maker, but Waaree brand, I think will mean that that Waaree brand will discount maybe this lack of cell or wafer and ingot, and then slowly it will start getting priced in. But in the short term, my sense is if today Premier is at say 50 times, right now based on the current valuation, probably 50 odd times, I feel Waaree will also end up at around 50, 55 times FY25. And if, as Tanmay is saying, they'll do say 1,800 crore, it means it should get around 1 lakh crore, 90K to 1 lakh crore market cap. It's 1600 crore. 1,600? Okay. I feel they should do a bit more than that. I think they did 400 in the first quarter. I hope they should hit higher than 1,600 for the full year. But yeah, I think again to each person to make their judgment on what that number is. Listen to some interviews. As soon as the IPO's out, there will be some interview. They'll come on all these channels. They'll be able to give more concrete sort of guidance. So you can use that to try and determine what that number is, and maybe use the Premier number as the current sort of benchmark to see where this will list at. It's very difficult because that number can go from 80,000 crore to 1 lakh crore and come back down to 80,000 crore also. So can't really say that it is exactly one number. Got it. I also kind of feel similar. In fact, this is something which we discussed also. So just for everyone's
benefit. Waaree doesn't have sell yet, so उसकी वजह से ना इनका margin comparatively Premier से कम. So you can't compare it one on one versus Premier Energies जो IPO आया था, क्योंकि इनका margin ना 8% है पैट लेवल पे, Premier Energies का 11 साढ़े 11% है. So it's not comparable on that level, but then Waaree is a brand. काफी known brand है. They also do publicity very well and they are a listed company. So I feel वो उसको डिस्काउंट कर देगा as Rohit mentioned. So because of which it would probably trade at a premier का valuation. Again, difficult to say. PAT also I think would probably be slightly higher than 1600. 1600 तो annualize करके हो जाएगा क्योंकि 400 करोड़ किया हमने फर्स्ट क्वार्टर में. But let's see what are the projections. I know projections have been all over the place. कोई लोग 3300 भी बोल रहे थे, कोई लोग 2300 भी बोल रहे हैं. So it's a function of the PAT multiplied by the PE which market will give. I feel कल जब अभी I think IPO videos आ गए होंगे promoter के, but that will give more clarity. But at least at IPO price it's a slam dunk apply and hope and pray. Regarding subscription, I feel the 11 big HNI number is slightly conservative. Everyone just opening accounts left, right, and center. So I feel that number would be broken. I feel that number to be somewhere around close to 13. But let's see. I'm hoping that number to be as low as possible. I'm planning to apply to this IPO with multiple big HNI applications and then hope. Over to you, Tanmay. And just one thing before that. हाँ एक चीज मैं कवर कर लूंगा कि अगर आपने ये बीच में ज्वाइन किया है तो YouTube वीडियो का लिंक ऊपर है, इस पे हम ये पूरी स्पेस भी रिकॉर्ड करके डाल देंगे, तो आप अपने लेजर पे भी ये सुन सकते हो. सो गो अहेड एंड फॉलो द YouTube चैनल एज वेल, ताकि आप उस पे ये वीडियो देख के अपना डिसीजन ले पाओ. इसमें हमने जो आज की वारी है उसके अलावा 3 और कंपनी बात की है, ये मैं कल स्पेस डाल दूंगा उस पर. और उसके अलावा जो कल हमने 4 कंपनीज की थी उसका भी वीडियो पिन कमेंट्स में है. उसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन post it in the chat box. After we finish up Tanmay's reading the annual report, we'll go to questions as well. Just one request, please don't ask with respect to any listed company. वो questions हम नहीं ले पाएंगे, but any questions which you have with respect to these 4 IPOs or even the other 4 open IPOs, we can take them. Over to you, Tanmay. हाँ. सो मतलब मजे की बात ऐसा है ना कि ये इनका और एक 15 करोड़ का एडजस्टमेंट था, उसके ऊपर इन्होंने 15 लाइन्स लिखी है, और 300 करोड़ के एडजस्टमेंट पे 4 लाइन्स लिखी है. मैं पढ़ के बताता हूँ. ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशंस एंड सेटलमेंट agreed with 2 customers, including a settlement subsequent to balance sheet date, the company has accounted order cancellation fees of 341.3 crores March 31, 2023. Considering the non-recurring nature of income and amounts involved, such income is disclosed as exceptional items for the year ended March 31st, 2024. Okay, तो मैं इसका सोर्स बता दूं. Note 61 in the annual report. Okay. अब उसका मीनिंग भी बता दो सर. अरे मतलब वो रफी ये बोलना चाहते हैं कि हमने एक क्लाइंट से ऑर्डर रिसीव किया था और उसने कैंसिल कर दिया ऑर्डर देने के बाद, तो वो जो कंपेंसेशन फी था ना वो इन्होंने चार्ज किया है, जो पिछले 3 साल में 1 रुपया भी नहीं है. मतलब ये एक्सेप्शनली है और रिकरिंग नहीं होगा. तो मतलब वो अगर लोग देखे ना तो बोलता है कि 1200 से 1600 करोड़ का पैट बहुत छोटा जंप है, बट ऑनेस्टली वो 900 से, मतलब जो अपन एक अज्यूम कर रहे नंबर एज ऑफ नाउ, तो दैट इज ऑल्सो गुड जंप. Got it. एक दो questions हैं Tanmay. Let me read these out for you. First question is, do you think that this is a H1 heavy, H1 light business and H2 heavy business because of rains, etc. Because of which quarter 1 can't be clearly extrapolated. Is any update, any thoughts on that? सी मैं ना एक चीज बोलूंगा कि पिछले साल का, पहली बात तो मैं एक हिस्टोरिकल नंबर्स पे आऊंगा, फिर मैं थोड़ा लॉजिक करके आऊंगा कि वारी का अगर देखो इन्होंने फर्स्ट क्वार्टर का कंपैरिजन दिया है ओके पब्लिकली. अगर आप रेवेन्यू में देखोगे ना तो सिर्फ 2 या 3% का ही ग्रोथ है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 एंड फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY24 एंड फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY24, मतलब करंट फाइनेंशियल. तो सिर्फ 2-3% का रेवेन्यू ग्रोथ है. बट द पैट ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ बिकॉज उनका मार्जिन अच्छे से इंप्रूवमेंट आया है. तो मैं इससे बोलना ये चाहता हूँ कि, और अगर आपने वो पिछले साल का जो पैट है ना वो एनुअलाइज किया और वो एक्सेप्शनल आइटम को हटा दिया तो वो 25-27% नहीं, 27-28% ऑफ द साल बैठता है. तो मतलब जो इसे निकल पा रहा है कि इनका Q1 एक सिग्निफिकेंट एक अच्छा 25, 27, 29, 30% क्वार्टर होता है.
और ये ना रेवेन्यू अकाउंटेबिलिटी इनका आई थिंक द प्रपोर्शन ऑफ मॉड्यूल्स प्रोड्यूस होता है कि नॉट कि ऑर्डर एग्जीक्यूटेड बहुत कम। देखो ये इनका ऑर्डर भी अकाउंटिंग मेथड्स भी हर कंपनी का अलग होता है और पर ऑर्डर अलग होता है। बहुत सारी कंपनीज क्या करते हैं कि समझो 200-400 करोड़ का ऑर्डर है तो उसका प्रोडक्शन आने के बाद वो डिलीवरी होने के बाद बुक कर लेते हैं, और जो बहुत बड़े ऑर्डर्स होते हैं तो उनका बेस्ड ऑन हाउ मच इज दी ऑर्डर डिलीवर्ड मतलब परसेंटेज ऑफ इट उसके हिसाब से रेवेन्यू बुकिंग करता है। तो आई पर्सनली फील कि ज्यादा से ज्यादा लाइक 47-53 के बियॉन्ड मुझे लाइक 45-55 भी मुश्किल लगता है। मतलब आई डोंट फील कि ये H1 H2 हैवी क्वार्टर फॉर एन कंपनी लाइक वारी और इवन प्रीमियर दो नहीं होना चाहिए, और all four should be almost equal only. Q1 should be slightly 2-3% higher than the all the quarters of the year. Oh, you're saying quarter one would be higher. Interesting. Yes, because सर वो historical numbers of all the companies in this sector दिख रहा है। ओके तो उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज इसमें लिस्टेड कंपनीज नहीं तो फिर मुझे भी कमेंट कर पाना लाइक मतलब ऐसा कुछ भी बोल देना भी गलत हो जाना, मेरे पे बेस नहीं कुछ भी बोलने का। एंड इट्स नॉट कि आई एम एन इंडस्ट्री पर्सन, इट्स जो मुझे हिस्टोरिकल नंबर्स दिख रहे हैं तो पिछले साल का वारी का नंबर है, मैं उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। I'll just add one point here. I think one thing with Waaree is they are very, very export heavy. So export heavy does not have the same thing in India. Like if you compare with somebody who delivers primarily in India, you will see that impact of monsoon. But in Waaree, I think it is almost 60% export. So that monsoon impact doesn't happen. So its numbers will be somewhat more uniform. But I think the business and sector is growing so fast that you will definitely see Q4 should be higher than Q1 in terms of just normal, business growth. So you can assume that to be there. H1, H2 ka impact, just the seasonal or the monsoon impact will be lesser for somebody like Waaree because that, they're kind of de-risking that by just having so much more export. Got it. उसके अलावा एक कमेंट मेरे को जो अभी अभी दिख रहा है दैट सेज दैट जो भी अपने लिस्टेड प्लेस है सोलेक्स, एल्पेक्स, वेबसॉल, एसडब्ल्यू सोलर सब लॉसेस में पर 100 पी पे हैं, तो आप लोग वारी को सिर्फ 65 पी क्यों दे रहे हो? नॉट अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक। सो ये 100 पी ट्रेलिंग है। आप FY24 का पी देख रहे हो या फर्स्ट क्वार्टर तक का पी देख रहे हो? हम लोग 65 फॉरवर्ड पी की बात कर रहे हैं। ट्रेलिंग वुड बी ऑलमोस्ट 100 आई थिंक 44 पे आ रहा है, राइट? सो इफ यू मल्टीप्लाई बाय 2 दैट वुड बी समवेयर अराउंड दैट नंबर, राइट? अज्यूमिंग द 900 CR। सो अगर आप 900 करोड़ का इसका पैट पकड़ते हो और अगर बात ये हो रही है कि 1 लाख करोड़ पे वैल्यूएशन पे लिस्ट हो जाएगा, so the P is greater than 100 in that case. Another question, again, I don't know if there's an answer to this, if anyone knows or anyone has calculated, but any idea on Waaree margins after sell commissions this year? I'm assuming in line with that component would be in line with what Premier's margin would be, but any update on this, Tanmay, Rohit, anyone of you have done the calculation on this? सर मुझे कोई क्वेश्चन पूछा गया था बिकॉज लास्ट 2 मिनट्स में मेरा थोड़ा सा कनेक्ट डिस्कनेक्ट का इशू हो गया। Yeah, I was asking, जब वारी का सेल कमीशन हो जाएगा, so any idea on what their margin could be, PAT margin could be? CFO has given an hint on the EBITDA level of 300 basis points। और मतलब जो इंडस्ट्री चलता है ना सर कि इनका वेफर और इनगोट अगर सब इंटीग्रेट हो जाए तो अराउंड 500 बेसिस पॉइंट्स एट EBITDA लेवल मतलब 5% फर्क पड़ेगा, एंड सेल की वजह से 300 बेसिस पॉइंट पड़ेगा। ये 300 का नंबर CFO ने दिया, बाकी का इंडस्ट्री के हिसाब से बोला मैंने। Got it. Any other questions that you guys have? Also, any idea on कि ये कहाँ पे कितना रिटेल सब्सक्राइब होगा? I think should be around 7, 1 out of 7, but 6.5 times, 6 to 6.5 times। हाँ, बहुत ओवर द रूफ चला गया तो बात अलग है, बट 6.5 times can be a good number to work with। what do you think about Big HNI? बिग एचएनआई यार, बिग एचएनआई ऑनेस्टली 12 गुना निकल जाएगा, 12 टाइम्स चला जाएगा, मतलब 13 भी जा सकता है, बट थोड़ा सा लगता है कि कुछ क्लैशेस आ रहे हैं और वो ऐसे में भी है दानिश, तो 12x कैन बी अ गुड नंबर टू वर्क। Got it. उसके अलावा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात हो रही है, तो I'm assuming we have already covered capacity utilization. मैं एक्चुअली मैंने कवर नहीं किया एक्चुअली, वो ना पॉइंट बहुत कॉम्प्लेक्स है इसलिए मैंने वो छोड़ दिया था, तो मैं थोड़ा बात कर देता हूँ उस पर। तो क्या है, अगर आप इसका ऑन पेपर देखोगे ना तो ये 46-47% दिखता है। कोई बोलेगा कि भाई
इतना 46-47% है, तो यार आप कैपेसिटी इतनी क्यों बढ़ा रहे हो? तो मैं इसका एक रीजन बताता हूँ। ये जो पूरा सेक्टर है ना, ये टेक्नोलॉजी चेंजेस पे बहुत चलता है। ओके, तो पहले मोनोक्रिस्टलन हुआ करता था, फिर पॉलीक्रिस्टल, अभी टॉपकॉन चल रहा है। हाँ, अभी अगला एक और मल्टी क्रिस्टलन करके और कोई नया टेक्नोलॉजी आ रहा है। तो क्या हो रहा है, जो इनकी पुरानी लाइंस थी ना, जो पुराने टेक्नोलॉजीज की थी, तो उसमें पूरी शर्ट बंद कर चुके वो फैक्ट्रीज। मतलब इस सिमिलर चीज हमने प्रीमियर में देखा था कि उनका एक गीगावाट का लाइन एफआई आई थिंक इट वाज फरवरी और मार्च ऑफ 2024 उन्होंने कंप्लीटली शट कर दी थी। तो सेम गोज विद वारी की उन्होंने पुरानी लाइन शट कर दी। अगर मैं नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से और वो जो दूसरी टेक्नोलॉजी जो आज भी थोड़ी बहुत चल जाती है पॉलीक्रिस्टल, उसका अगर मैं ब्लेंड करके बोलूँ तो 75% अराउंड क्या कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है आज इनका। Got it. Any more questions that you guys have, or we can kind of wrap up the space? Just want to highlight कि अगर आपने बीच में ज्वाइन किया है तो ये हम चैट ये YouTube पे भी डालेंगे, तो आप उस पे भी देख सकते हो YouTube पे, और बाकी सब कमेंट्स भी मेरे YouTube चैनल पे हैं. The YouTube channel is linked, pinned on the space. One more question which I can see is any raw material risk since they kind of import the raw material from China. Yes. Honestly, that is a very big risk because see, ये कंपनी देखो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग अभी बहुत, मैं रॉ सेंस में कैजुअल सेंस में बोलूँ तो आई फील बट चलेगा, ठीक है, पकड़ लेते हैं इसको। तो ये क्या करते हैं, सोलर सेल को लेते हैं और फिर अपने टेक्नोलॉजी से इसको सोलर मॉड्यूल में कन्वर्ट करते हैं। ओके, मतलब बेसिकली ये असेंबली ही कर रहे हैं आज के दिन। तो सोलर सेल चाइना से ही मंगाते हैं। मतलब आई फील जितना ये रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं उसमें से आई थिंक 70-80% चाइना से ही आता है। सो सप्लाई चेन का रिस्क श्योरली है, बट वही है ना कि इनका 6 गीगावाट का एक बार सेल का फैसिलिटी बैठ गया तो इनका 50% ऑफ दिस सेल ये इंटरनली ही बना लेंगे बैकवर्ड इंटीग्रेशन थ्रू। तो आई फील अभी है वो रिस्क, बट आई थिंक आई नो कि सेल अगले क्वार्टर में कमेंस होने के बाद उसकी लाइन सेटल होने में 3 महीना लगने वाला है। बट ये फाइनेंशियल ईयर भी मैं छोड़ दूं तो अगले साल आई थिंक ये रिस्क मिटिगेट हो जाएगा। Got it. I'm seeing these are the questions which we had. Hyundai we have already covered, so not going into Hyundai. It's an issue which has kind of fried me completely. So let's see what happens tomorrow. Maybe we'll cover it after it gets listed and we have some clarity. But any more questions? Waaree GMP can further improve or not? No idea. Not involved on GMP. Whatever it lists on, it would list positive. So you can go ahead and apply. It's the only thing which I can say. The lines which they close, will it be upgraded to future technology or नो will, नो will नो it be shut नहीं, वो down permanently? कंप्लीटली शट हो जाता है, उस पर कोई चेंजेस करना पॉसिबल नहीं होता। Got it. I think उसके अलावा किसी ने बोला दीपक का रिव्यू, सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दीपक. यूट्यूब चैनल पे है, वो लिंक ऊपर है पिन कमेंट्स में, आप उस पर जाके दीपक का रिव्यू सुन सकते हो. आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट अनलेस सर यू कैन सी एफकॉन्स एनी पे भी क्वेश्चन. डाउट्स आए हैं, एफकॉन्स पे। इफ यू वांट टू टेक फॉर अ कपल ऑफ नहीं नहीं, मिनट्स अगर अभी ले लिया तो अगले स्पेस में लोग नहीं आएंगे। so we will cover it in the next space on the weekend. ये वाला space हम कल डाल देंगे YouTube पे. Uh, and then we'll see. But let's see. Anything else that anyone has in terms of like final passing comments? वारी Maybe लगाना है the सबने। priority list. Priority list. Yeah, Mainboard it is very clear. Waaree. On SME it is very clear. Danish. But then you see how much funds you have managed basis. That so it's not a difficult week to choose for IPOs. You have IPOs, you just go. You need to go and apply. Unless someone has any other views, we can kind of close the space now. I think we can close it. Perfect. Thank you so much, guys. And everyone, thank you for joining. थैंक Thanks यू everyone.